शोक की सभा में, या फिर ब्रह्मा जी की नगरी में, वहां भी लैंड हो सकता है। आताल पाताल, समुद्र, पहाड़, कहीं भी पहुंच सकता है। और इस विमान में आपका पैराशूट है, आपका खुला हुआ दिमाग। तो दिमाग खुला रखिएगा पूरा सेशन सुनते हुए। और अगर आप किसी भी स्पीकर से डिसएग्री करते हैं तो टॉलरेंस का मास्क नीचे खींचकर जोर जोर से सांस लीजिएगा, दिल और दिमाग से दबाव घट जाएगा। इस यात्रा में हमारा आज का पड़ाव है प्राचीन भारत की न्यायिक व्यवस्था, यानी एंशिएंट इंडियन जुडिशियल सिस्टम। समयान का मानना है कि एक राष्ट्र लकीरों से नहीं, उसकी सोच से बनता है। और इस सोच को जानना, नए सिरे से भारत को पहचानना, यह समयान का कर्तव्य है। कला, विज्ञान, साहित्य, इन सभी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि भारत को अपने नजरिए से देखना सीखें, बिना शेडेड ग्लासेस के। कविराज कालिदास ने कहा है कि जरूरी नहीं जो चीज पुरानी है वो अच्छी है और जो चीज नई है वो अच्छी नहीं है, पर दोनों चीजों को जानना हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद ये हम पर निर्भर करता है हम किसका पक्ष चुने। आप में से आधे लोग पक्ष विपक्ष करते हैं पूरा दिन, तो आई थिंक सही पक्ष चुन करके आप अपना निर्णय ले पाएंगे। हमारे आज के सेशन के 3 स्पीकर्स हैं, जस्टिस प्रमोद कोहली, जस्टिस एसएन ढींगरा एंड एडवोकेट JSaiDeepak। अब मैं इन तीनों से अनुरोध करूंगी अपने स्थान ग्रहण करें। जस्टिस प्रमोद कोहली, प्लीज सर आप आइए पहले। अब फिलहाल तो हमारे पास कोई भारतीय तरीका नहीं है स्पीकर्स के स्वागत करने का, तो तालियां ही हो जाए। मैं आपको हमारे पहले स्पीकर श्री प्रमोद कोहली जी से इंट्रोड्यूस करा दूं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट से पहले सर स्पेशल काउंसिल के तौर पर JNK लिबरेशन फ्रंट के केस में, के बैन के केस में जम्मू और कश्मीर राज्य को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और सालों तक उस मिलिटेंट आउटफिट की हिट लिस्ट में भी रहे हैं। पर आपने न्याय को सर्वोपरि माना और एक अधिवक्ता से लेकर के एक न्यायाधीश तक के अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाया। जस्टिस PN भागवती अवार्ड, विधि रत्न बाई बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एंड ऑनररी डॉक्टर्स डिग्री से सोसाइटी ने आपकी कंट्रीब्यूशन को सम्मानित किया है। जस्टिस कोहली कई सालों से यमुना नदी और उसके आसपास के क्षेत्र की स्वच्छता के लिए कार्यरत हैं और पौंटा साहिब के नजदीक से जहां यमुना नदी बहती है वहां सर ने 20,000 पेड़ भी लगवाए हैं। अब मैं जस्टिस कोहली से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया एंड देयर जुरिस्डिक्शन पर अपना सेशन शुरू करें। A very good evening to all of you. My brother Justice Dhingra, Mr. JSaiDeepak, and dignitaries who are part of this evening's program. I welcome you all. Today's topic, which has been set for debate, is very interesting. But at the same time, it is a bit complex as well. Some of us, or most of us, have association with the judicial system. As lawyers, as judges, as litigants,
or even as journalists, you are associated with the judicial system, which is one of the vital pillar of the democracy and is as relevant and important as any other pillar. We are talking of judicial system in ancient India, going from 4th to 5th centuries. Many books, many Samritis have referred to the ancient judicial system, and it is revealed that the judicial system during those days was as relevant, prevalent, robust, and vibrant as we have a judicial system today. It is also believed that it was also as effective as the today's judicial system is, rather maybe more effective. The composition of the courts and judicial forums during those days was complex and comprised of many tiers. There were many dimensions of the courts. According to Brihaspati Samriti, the disputes were being decided by organized groups, professions, and communities as were recognized by the king. These disputes were being decided according to their own rules. There were several groups exercising judicial functions such as cultivators, artisans, artists, money lenders, associations of tradesmen, dancers, all kind of persons, professionals from society were being empowered by the king to decide cases within their own fields and jurisdictions, and according to their own rules, which were beneficial and were relevant for taking a call or doing justice within the community. And even these organizations, persons from different professions were being appointed so that the justice is carried out with the due understanding of the issues before the tribunals or the courts. Brihaspati has classified the courts into 4 categories: stationary courts, non-stationary courts, the courts furnished with the king's seal and directed by the king. Stationary courts were located in villages and towns, and people used to visit and refer their disputes to such courts. Apart from that, there were non-stationary courts, means movable courts. These courts used to have their sittings at different places and mostly where there is inhabitations. It is also noticed that the moving courts or the mobile courts were also visiting the forest areas to decide the disputes of persons living in those areas or where the disputes pertain to the forest areas. Not only that, if there are disputes of the merchants, they used to decide while going to the areas where the merchants used to do their business and all that. The moving courts were primarily doing summary trials, which can be decided at spot. According to Brihaspati Samriti, hierarchical courts in ancient India began with the family courts and ended with the king.
the lowest being the family arbitrator. The next higher court was the judge, followed by the Chief Justice and the King. Jurisdiction of each court was decided by the importance of the dispute. That is, multi-level courts were in existence. According to Kavyana Samriti, courts in ancient India were divided into 6 categories. The first was the Kula. These were the family councils, which was a group of elderly people and who educated their family members on how to handle conflicts within the family or among families or familiar backgrounds. These courts could try all civil and criminal cases. It could deal with all matters relating to endowments, irrigations, cultivation, punishment of crime, etc. The next category of the courts, which was slightly different from these courts, was Shreni. These courts were for the professionals. Professional councils, which comprised of an assembly of old and knowledgeable people who were recognized as unbiased among a group of traders, professionals, and craftsmen to arbitrate conflicts. These courts could also try all civil and criminal cases. These councils mostly consist of a president and 3 to 5 adjudicators. The next category is the Ghana. This was a village assembly, which was a huge gathering of village elders who were regarded as knowledgeable, unbiased, and trustworthy by the people of that particular region. These courts too could try all civil and criminal cases. The next category is Adhikrita. Adhikrita was the court appointed by the king. These courts were recognized by the king to serve justice via people who were highly trained in the Shastras and Samritis. These courts had variety of forms depending on their jurisdiction. They may be broadly divided into 3 categories further. Pratishta, courts founded in a certain village or town. Apratishta, movable courts which would be convened in a given location to try some specific matters and summoned by the king. Mudrita, higher level court which had the authority to use the royal seal. These courts could also hear instances related to violence. The next category is Sasista. This was the kingdom's highest court of law. The king himself presided over it. The chief justice named Pradvivaka and a group of judges named Sabhyas were appointed to serve and support the king. The next category which is the highest court of the land is Nirupa. This was the supreme authority, being the king himself. He himself practiced the process of legal judicial adjudication and was governed by dharma. He was not to contradict the dharma principles. Therefore, the king derived his powers from dharma. This court had both original and appellate jurisdiction. Mani Samriti prescribes the 10 essential rules for observance of the dharma. And these rules are very relevant not only during those days but even today. The first being patience. A judge should always be patient to hear the parties with grace. Then forgiveness. Even if somebody had some bias, some mind, but he has to forget about that, and that was Kshama, was another principle which a judge must observe. Then pity or self-control. One has to decide without being influenced by anything. Then honesty is the foremost requirement of a judge and will continues to be today also. It is said that integrity is the first thing which a judge should require or possess.
You can acquire knowledge, you can acquire any other quality, but not the integrity. Integrity comes from within. Then sanctity is another qualification required for a judge. Control of senses. Then reasoning, knowledge or learning, truthfulness, absence of anger. It is believed that there are always three sides of the stories. One is, say, petitioner's view, another is the respondent's view, and the third part of the story is the truth. The job of the judge is to find the truth, and that is the real justice, irrespective of the facts before it, but that is the real justice, to find truth. Each court in the hierarchy of courts was invested with the power to review the decision of the courts below, like we have a hierarchy today. Disputes were decided in accordance with principles of natural justice, rules of procedure and evidence, which were followed broadly similar to those being followed today. During Manu's period, the jury system existed. Manu recommended the king to give power of judicial administration to Brahmins in his absence. Jurors were referred to as Sabasada, who acted as assessors or advisors of the king. These jurors could express their opinion without fear and could disagree with the king. In ancient India, there were four legs of the law. The first one was sacred law, that is Dharma, which is the eternal truth, holding its sway over the world. The second was evidence, that is Vyavara, which is in the shape of witnesses and documents. The third is history, Charitra, conduct of the persons. Nowadays, it is hardly considered. The conduct of persons is hardly considered while deciding cases. But I remember when I started practice in 1972, and the evidence of witness is being recorded, and if witness takes a pause for more than half a minute or two or one, the judge used to record that witness is taking time to answer the question. If witness is avoiding a question, avoiding the answer, the judge used to record. Unfortunately, today this entire system has vanished. No judge has time to record the conduct of the witness, and which is so relevant even today, that if all these things are properly recorded, the result could be different. Then the edicts of the kings, that is the Raja Sasana, or the, as we say, the command of the law or the command of the rules, that these were. According to Katolias of Shastra, the bench of the judges should be three, who shall hold court at frontier post, sub-district headquarters and provincial headquarters as may be necessary. See how vibrant, how relevant this system was at that time, how well thought of procedure system was operating during those days as well. About judges, it is said that the quality of a judge should be such that while discharging the functions, he should not threaten, intimidate, drive away, or unjustly silence the litigant. Unfortunately, I too belong to the community of judges, but what is happening, it's better not to say many things, but I am sure you must be knowing many things how the courts are being conducted nowadays, which is unfortunate. The judge should not abuse any person coming before the court. He should not fail to put relevant and necessary questions. He should not leave off consideration answers relevant to his questions. He should not ignore. If the judge has asked a question, it should be answered, either by the lawyer or by the litigant.
There are many other qualifications which a judge, it's not basically a qualification, it is regarding the conduct of the judges, how the judge should conduct the courts. The Ghotalia also refers to manner in which the judges and magistrates have to impose sentences and punishments. These Samritis refer to the role of the king as the highest court of justice. See how the judge or even king, while functioning as a judge, should behave. It is written that a king, after having completed his morning routine and shown due respect to his guru, astrologer, physician, deities, Brahmins, and family priests, should enter the court room with pleasing appearance. He should be dressed in a simple manner. He should keep composed mind and accompanied with persons having knowledge in 3 Vedas, elders and counselors well versed in statecraft. He should decide the cases in the courtroom in first half of the day according to Shastras. It is believed that 3 parts of the day after the first 8th part is the time for administration of justice. That's a belief. Sometime back, even the highest court of this country, many judges used to work only up to half a day, that is up to lunch. It is only recently that the timings have been changed and most of the judges have started sitting after the lunch period. But during those days, also the practice was that the judge should sit even after the afternoon. Duty of the king to appoint judges. Manish Samriti says that the king is the appointing authority for the judges of the courts. He is required to appoint those who are honorable men, of tried integrity, and able to bear the burden of administration of justice. The king can delegate some of his judicial functions, duties to different associations, relatives, companies of artisans, assemblies of co-applicants, and other persons. Impartiality is the hallmark of the judicial, of the administration of justice. Narada says, king should be impartial. Thank you, sir. I'll always remember lack of arrogance and lack of anger, 2 very important things for a judge. And it was very interesting to know that courts used to travel to the disputes rather than the other way around. आप लोगों के मन में भी प्रश्न और जिज्ञासाएं होंगी। तीनों सेशन के एंड में हमारा इंटरेक्शन है, क्वेश्चन आंसर है। अपने सवालों को तब तक रोक कर रखिएगा। हमारे दूसरे स्पीकर हैं एडवोकेट जे साई दीपक, an engineer turned lawyer
he is practicing as an arguing counsel, primarily before the Supreme Court of India and Delhi High Court. A mechanical engineer from Anna University, he graduated with a bachelor's degree in law from IIT Kharagpur in 2009. Over the years, he has been a part of several landmark matters, such as the ones relating to the Sabrimala Ayyappa temple, the Sri Padmanabham Swami temple, and Basmati geographical indications. He is a prolific writer on constitutional issues, and his books, India that is Bharat, and India, Bharat and Pakistan, the constitutional journey of a sandwich civilization, have been very well received. And we have one of them right here on display.
I'm going to be very tentative in my language because I'm not an expert. The one thing that seems to be very, very clear is that the Vedas are not merely seen as scripture in that particular sense, in the Abrahamic sense or the Western sense. And that is because you don't subscribe to religion as a concept. You see dharma as a slightly different concept, and it is closer to natural law. Dharma as a philosophy is closer to the principle of natural law, if at all you wish to compare it with some kind of a Western framework. And therefore, there are very clear thought processes associated with what you think is the origin of the universe. And from there, you ask yourself, what is this cosmological order that the universe expects you to maintain, and therefore, what is the concept of natural law? How does that then percolate to the level of the society? So that's how the entire structure is built. So it's almost like a telescopic structure in that particular sense. The lens is broader, let's say broad, narrow, so on and so forth. And then finally, when it comes to the realm of the society, you see the application of that abstract philosophy to very practical day-to-day issues. Now, in that particular sense, the first question that we must be asking ourselves is, what is this particular source of law on the basis of which the judicial structure is created? You need a source of law from which laws are emanating. And then you need the infrastructure to implement and administer that particular body of law. So infrastructure, for all practical purposes, is merely a hardware manifestation of the thought. The question is, what is the thought behind it in the first place? Now, the software in that particular sense starts with rule number 1, which is Vedas are treated as the primary authority, which is the pramana. For every position and on every subject, it is treated as the primary authority. But they realize very clearly that Vedas are not capable of being understood or imparted or disseminated by everyone, because it is seen as a higher degree of abstraction. And therefore, for Vedas to be relatable for day-to-day application, you need to bring it down a notch further. And that notch further takes the form of smritis. So the smritis are seen as much more relatable a body of case law in that particular sense, which allows you to reduce the level of abstraction of the thought behind the Vedas to application. So from basic sciences to application sciences. So from theory to application, that is the journey that you would largely see between the Vedas, or from the Vedas to the Smritis. Now, before I proceed further, there is one thing that we must remember, that Vedas are treated as authoritative, but Smritis are slightly more malleable. So when we read Hindu law as part of legal education of this country, there is a tendency to treat Smritis as law, when in fact the truth is it's not entirely law, which is to say it's not entirely mandatory, nor is it fully free for all. The truth is actually somewhere in between. Because Smritis, how do they work? So I happen to ask this particular question. So Smriti effectively says, or the principle behind Smriti is, if you were to see who lives his life entirely in compliance with the Vedas, and you are not able to understand the Vedic principles, you will treat the life of that particular person as a model worthy of emulation. And those practices followed by that person is reduced to the level of a smriti, and that becomes what is known as achara or custom. So how much of a role custom has played in the creation of smriti itself is a huge body of knowledge. So as far as smriti is concerned, the one thing that needs to be noted is, obviously because smriti is slightly more context based, it is how do I put it? It is contingent on 3 aspects, which I'm sure most people have heard on a regular basis: Desha, Kala, Samay. Therefore, Smriti is heavily contextual, and therefore there is no one Smriti, there are multiple Smritis. And most importantly, there are different Smritis which are prescribed for different phases of time. So while Manusmriti is typically the most discussed Smriti and perhaps even the most reviled Smriti
for reasons of ignorance and lack of understanding. The fact also is, as far as this particular phase of human period is concerned, traditional scholars are of the view that it is the Parashara Smriti that is applicable and not the Manusmriti. So usually when you use Manusmriti to understand the entire time period of, let's say, this particular civilization's journey, you're doing huge injustice because there are other Smritis depending on the phase that you're discussing. Now, the journey from Veda to Smriti is as follows, therefore, that you make it even more applicable. And Smritis also have a significant degree of record to it, which is to say, it is not merely prescriptive in nature in terms of telling you what you must do, it also has a significant descriptive component to simply say, this is exactly how it happened during this particular period. It may or may not have a binding nature for the future. It is merely recording a state of affairs as it existed during a certain period of time, which is exactly why I'm saying that to treat it as law, as having a binding value, is not entirely correct. However, it is equally true that the choice is left to you to treat a particular Smriti as the value framework or the legal framework that you should apply. So therefore, you will find significant historical documents to show that, for instance, the Vijayanagara Empire was a huge defender and enforcer of the Manusmriti. So depending on the kingdom that you're dealing with, depending on the phase that you're dealing with, you can actually find out which Smriti did they actually subscribe to. What does this therefore tell you? That the myth that is in most people's heads, that the Manusmriti was uniformly applied across the country, across all time zones, is not true. I am not presenting an apologia for Manusmriti because we are not on the specifics of Manusmriti here. I am merely trying to present certain statements of fact. Because this is not a discussion on Manusmriti, it's a broad discussion on the legal framework. Now in this case, then the question that we might end up asking is, if the discussion is about the judiciary, then where is the legislature, where is the executive? Now the question that you may want to ask yourself is, why is the mind asking for 3 branches? Because have these 3 branches existed all along? No, they haven't. The splitting of the power infrastructure into legislature, judiciary and executive is barely a 300-year, 400-year phenomenon, perhaps not even as much. Because the constitutional form of let's say, government, so to speak, is at best a 300-year legacy, and certainly Eurocentric legacy in that particular sense. Now the question then that arises is, did we or did we not have our own constitutions? Yes, we did. Now what I will do is, as opposed to taking credit for whatever that I am saying, as someone who practices intellectual property law as one of his core areas of practice, let me spell out the sources so that attribution is given to people who have actually commented on this particular subject. So there are 3 people who have written fantastically on the basis of the infrastructure and the nuts and bolts of the infrastructure as far as the Hindu philosophy is concerned or the Bharatiya philosophy is concerned. And most of these people belong either to the late 18th century or the early 19th century or the early 20th century. After that, I haven't seen too much of original work coming out of it. And the ones who have then come out with the original work have been people who have translated stuff from stone inscriptions. So Dr. Nagaswamy, who passed away I think earlier this year or last year, was one of the foremost epigraphers and archaeologists this country has ever produced, and he has written tomes and tomes on this particular subject. But during the course of my own reading, there are 4 people that I have fallen back on for a very clear authoritative understanding. Sri K.P. Jaiswal is one gentleman that you must certainly consider reading. Then Sri V.S. Agarwal is the other person that you must consider reading. Then there is a Sri Lankan Tamilian who has come out with a fantastic series of works on what is the Hindu philosophy of state. And that would be Sri Ananda Kumaraswamy, a very popular writer, a very popular author. Then of course, someone who was awarded the Bharat Ratna, who was a practitioner of the Federal Court of India, which was the predecessor to the Supreme Court of India, P.V. Kane, Pandurang Vaman Kane, who has written this 10-volume behemoth called The History of Dharmashastras, which I think is a fantastic work, both on the abstract portions of it as well as on the practical portions of it. These have been certain references. The other gentleman who I think has done stellar work in this particular area
comes from the colonial establishment, William Jones, who's done a significant amount of translation from Sanskrit to English. And the one thing that he says, which I think will astound people who have a very stereotypical notion of Indian judicial systems, is that he says, while Bharatiyas and Hindus have been traditionally mild in their disposition and very peace-loving in their nature, punishment is the cornerstone of the Indian judicial system. And the value that is given to punishment as a deterrent, and here I'd like to quote what he has said. Here I must credit my researchers for having pulled out this particular portion, because I think I found this particularly useful. Allow me to just share this. I'm so sorry, just a second. This is on William Jones, yes. Punishment, according to a striking personification of the Hindu code, is the magistrate. Punishment is the inspirer of terror. Punishment is the nourisher of subjects. Punishment is the defender from calamity. Punishment is the guardian of those that sleep. Punishment with a black aspect and a red eye terrifies the guilty. This is his translation of the centrality of punishment in Indian judicial systems. Now, coming to how laws are created and laws are enforced, since Vedas and Shastras are seen as primarily the source of law and laws in themselves, to a significant extent should a particular kingdom choose to abide by it, the king and his executive are primarily seen as enforcers, not creators of law. They are not seen as legislators, because their purpose and their mandate is effectively seen as enforcing what has already been prescribed. So in that particular sense, at best they may be responsible for formulation of policy, but all and every policy will be tested on the touchstones of these pramanas, with Veda being the final last pramana. Now assume for a moment that there are multiple opinions on the same subject, which is possible. No two people need to agree on any particular subject. Then what is the way forward as far as the king is concerned? How does he then apply or choose between two different smritis, which may perhaps relate to the same Kalakhanda? Then what do you do? Then the principle that is typically applied is, first ask yourself, which of the two opinions are more consistent with the smriti you subscribe to? Or at least ask yourself, is it consistent with the Vedic position of this particular point of view? And when you realize that perhaps there are two positions which are equally valid, then what do you do? Then there is a last touchstone on the basis of which you choose. And that is the test of conscience. And therefore it is called Atmatushti or Swayamtushti. But Atmatushti or Swayamtushti cannot be the option of first resort, because then you can circumvent everything that's been prescribed. You get to fall back on your conscience only after you have exhausted all the sources. And when you find two conflicting sources, both of which seem equally valid compared to the mothership, and then you say, now I will take the decision on my conscience because I believe that this is the better version to go with. Now on the question of, the most important point is, obviously this particular land has existed more as a conglomeration of Ganarajyas at different points. And therefore, it's not as if one particular system of governance or one particular system of democracy or one particular system of administration has existed all across the place, unless and until you're looking at large-scale empires. But even if you're looking at the empire of Samudragupta or the empire of Chandragupta Maurya, they have been largely decentralized, because the difference between colonial invasions or the invasions that preceded them is that the purpose of invasion or the purpose of annexation, as far as Bharati philosophy is concerned, is to secure the title of Chakravarti. But beyond that, you will not interfere with an established system in each of the places that you have annexed.
Therefore, you have no incentive to get in and loot. You have no interest in changing the way that particular place operates. Your primary goal is to ensure that either the defeated king becomes your vassal or he becomes part of your kingdom and then therefore becomes one of your feudatories, so to speak. But you have zero interest in trying to change the way of established structure that already has existed. So there are clearly rules of war. Now, the sequitur to this particular position or the corollary is, if there are different, let's say, ways of administration, what are the differences that you're looking at? Where there are seeds of democracy. Now, the interesting part is, K.P. Jaiswal specifically points out that the Vrishnis are effectively the Yadavas. That is the race that is typically believed to be associated with Sri Krishna. And therefore, you're looking at the northwestern portions of the country, which currently go under the name Gujarat. Those portions of the country have traditionally existed as Ganarajyas, which therefore mean confederacies and not exactly monarchies. And if you were to read the Mahabharata in that particular sense, there is a clear
धन्यवाद। आपने थोड़े से समय में बहुत सारे कोनों को मध्य में लाने की कोशिश की। अब वो इतने सारे कोने हैं, आई एम श्योर उतने सारे प्रश्न भी होंगे जो हम बाद में आपसे पूछेंगे। आपने एक बात बताई मुद्रा राक्षस की। कहीं ना कहीं ये समयान से जुड़ा है, क्योंकि हम भी मानते हैं अपने पुराने इतिहास से, साहित्य से हम पुराने समय के भारत को खोज सकते हैं। That's all I wanted to say. प्लस जो कॉलोनियलिज्म की आपने बात की, उससे मुझे एक कहानी याद आई कि एक बार एक लोमड़ी ने एक सारस को अपने घर खाने पर न्योता दिया और सारस बहुत खुश हुआ। उसने दोपहर से खाना ही नहीं खाया कि आज लोमड़ी के घर खाने को मिलेगा। गया खाने खुशी खुशी। वहां पर एक तश्तरी में लोमड़ी ने सूप रखा था, तश्तरी फ्लैट डिश। सारस बेचारा, सारस आप लोग जानते होंगे लंबी चोंच वाला सफेद पक्षी। सारस बेचारा चोंच मारता रहा, उसकी चोंच में कुछ भी नहीं आया। फिर उसने लोमड़ी को बुलाया भोजन पर। लोमड़ी गई, उसने एक लंबे से जग में मछलियां भर के रख दी। जो जैसी लोमड़ी सामने बैठी, वो जग में से एक एक मछली निकाल के खाता रहा और लोमड़ी देखती रह गई, उसका मुंह ही नहीं गया जग में। तो शायद सारस के लिए वो जग सही था, लोमड़ी के लिए तश्तरी सही थी। तो शायद हमारे लिए हमारी सोच, जिसे हम जब भी खोजे, सही रहेगी, और कॉलोनियलाइजर्स के लिए उनकी सोच। आगे बढ़ते हुए मैं अपने तीसरे समय सारथी जस्टिस एसएन ढींगरा को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोग उन्हें जानते होंगे, बट शायद कम लोग जानते होंगे कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर से अपनी करियर की शुरुआत किए थे। उसके बाद वो बीएससी किए, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी एलएलएम किए। उसके बाद वो एक अधिवक्ता की तरह 12 साल जुड़े हुए थे और फिर न्यायपालिका में कदम रखे। क्रिमिनल, सिविल, स्पेशल कोर्ट्स, शायद ही कोई ऐसा जुडिशियल एस्पेक्ट होगा जो उन्होंने टच नहीं किया होगा अपने करियर में। डर, हिचकिचाहट और सकपकाहट, ये तीनों शब्द इस नाम के पास नहीं पहुंचते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जस्टिस ढींगरा से कि अब वो स्टेटस ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन एंशिएंट इंडिया पर प्रकाश डालें। प्रमोद कोहली, एडवोकेट साईदीप और यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति। न्यायपालिका एक ऐसा विषय है जिस पर आप घंटों बोल सकते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में क्या न्याय व्यवस्था थी, ये विषय एक गहन और गंभीर विषय। हम ये समझना चाहते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ और कहां से हुआ। वो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या थे जिसने इस न्याय व्यवस्था को जन्म दिया, और किस प्रकार की न्याय व्यवस्था जनमानस का के साथ न्याय करती। महाभारत के अंदर 59वां अध्याय शांति पर, उसके श्लोक 103-104 में राज्य व्यवस्था के जन्म का विवरण दिया कि राज्य व्यवस्था का जन्म कैसे। उसमें ये कहा गया है कि पहले जो व्यक्ति, जो लोग यहाँ रहते थे, वे सभी धर्म का पालन करते थे। थोड़े लोग थे, नोच खसोट की आवश्यकता नहीं थी, प्रकृति ने बहुत दे रखा और ज्यादातर लोगों की आबादी उपजाऊ स्थानों पर थी। जल, भूमि और प्रकृति प्रचुर मात्रा में, इसलिए किसी प्रकार का संघर्ष नहीं था और लोग आपस में
अपने धर्म का पालन करें। धर्म के बारे में मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि धर्म शब्द जो है वो उसे रिलीजन के समकक्ष ना, धर्म और रिलीजन किसी भी प्रकार से बराबर नहीं है। रिलीजन का सही अनुवाद मैं मजहब कहूँगा। तो यहाँ जब मैं धर्म कहता हूँ तो ये मजहब से इसको रिलेट मत करें। यहाँ धर्म का अर्थ है प्राकृतिक धर्म, नैसर्गिक धर्म कि व्यक्ति का सम्मान करे, उसके चीजों पर बुरी दृष्टि न डालें। धर्म के हमारे शास्त्रों में 10 लक्षण दिए हैं कि एक दूसरे का सम्मान करो, सच बोलो, क्रोध मत करो, क्षमा करो। तो इस प्रकार के 10 लक्षणों का जो है मौलिक धर्म है, जिसको कोई किसी भी मजहब के व्यक्ति के लिए वो उचित है। वो क्या पूजा करता है, कैसे पूजा करता है, उसका वास्तव में इस नैसर्गिक धर्म से कोई क्लैश या किसी प्रकार का वो नहीं। तो लोग धर्म से रहने का मतलब आपस में मिलकर परस्पर प्यार से रहने। लेकिन जैसे जैसे प्राकृतिक साधन कम हुए, जनसंख्या बढ़ी, तो मानवीय कमजोरियां जो होती हैं वो बलशाली होती हैं। हमारे अंदर मानवीय कमजोरियां हैं काम, क्रोध, लोभ। तो लालच एक ऐसी कमजोरी है जिसमें हम दूसरों की वस्तु को पाने की चेष्टा करते हैं। और विशेषतः अगर साधन कम हो और वस्तुएं कम हो, लेने वाले अधिक हो, तो छीना झपटी शुरू हो जाती। तो उस समय भी यही होने लगा और लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े हो। उस समय भी कई तरह के लोग होते हैं। हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, जो जल्दी फिसल जाते हैं वो भी होते हैं। तो समाज के प्रबुद्ध वर्गों ने ये सोचा कि भाई इसका अंत कैसे किया जाए, ऐसे तो समाज नहीं चलेगा। तो वो उस समय के ज्ञानवान व्यक्ति जो सबसे माना हुआ था, ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई हमारी इस समस्या का हल निकाल, कि हमारे जो है लोग आपस में इस प्रकार छीना झपटी और में करते हैं और मध्यस्थ न्याय रहते हैं। जिसके पास जितना बल है वो उतना छीन के। तो ब्रह्मा, महाभारत के अंदर ही ये उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने नीति शास्त्र का उस समय लिखा, नीति शास्त्र बनाया और उस समय के लोगों को ये कहा कि अगर आप इस नीति शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो इस समाज की सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। नीति शास्त्र में ब्रह्मा जी ने 3 विषयों को, धर्म, अर्थ और काम। चौथा विषय मोक्ष वो नीति शास्त्र में नहीं है। ब्रह्मा जी के इस नीति शास्त्र में 1 लाख अध्याय और वो नीति शास्त्र उस समय उन्होंने जनता को दिया। उस नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने कहा कि आपको अपने में से किसी क्षत्रिय स्वभाव का जो शूरवीर हो, जो बलशाली हो, उसको राजा करना। तो शूरवीर और क्षत्रिय स्वभाव का राजा उस समय के प्रबुद्ध लोगों ने ढूंढा। एक कर्दम थे, उनके पुत्र अंगी को उन्होंने राजा बनाया और उसके बाद उसका पुत्र वेणु राजा। वेणु को नीति शास्त्र के अनुसार ही शासन चला। लेकिन वेणु देखिए, ये सत्ता का एक गुण है
कि जिसके पास सत्ता होती है उसमें अहंकार और अन्य दुर्गुण आ जाते हैं। और अगर वो धर्म का पालन ना करे, धर्म से अक्षर अपने कर्तव्य का पालन ना करे, तो ये गुण उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो वेणु जो है अत्यंत क्रूर हो गया और जिस उद्देश्य के लिए उसे राजा चुना वह विफल था। अब आप इसमें कहेंगे तो क्या हुआ? जिन प्रबुद्ध व्यक्तियों ने उसके पिता को राजा चुना था, उन्होंने ही जनता के संघर्ष का नेतृत्व किया और वेणु की हत्या की। वेणु की हत्या के बाद उसके दो पुत्र थे, दोनों में से पृथु जो पुत्र था वो अधिक योग्य था, उसको राजा बना, लेकिन राजा बनाने से पहले उससे वहां के प्रबुद्ध लोगों ने वचन, एक प्रकार का वचन पत्र उनसे, पहला वचन क्या था कि मैं नीति शास्त्र का पालन करूंगा और अपना शासन धर्म के अनुसार करूंगा। दूसरा वचन, मैं सभी को समान दृष्टि से देखूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा और किसी के प्रति दुर्भाव से कार्य। तीसरा वचन, मैं दुष्टों को दंड दूंगा, अपनी शक्ति से उनको पराजित करूंगा और दंड। चौथा वचन, मैं संभ्रांत लोगों की रक्षा करूंगा, विद्वान लोगों को आश्रय दूंगा। पांचवा वचन, मैं ज्ञान और विद्या की वृद्धि करूंगा और इस प्रकार मैं अपने शासन में जनता की सेवा करूंगा। और छठा वचन ये था कि मैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मण से मेरा अर्थ विद्वान लोगों से, कि मैं उन्हें अवध्य मानूंगा और उनका वध। इस प्रकार 6 वचन जो उनसे लिए उसके अनुसार वेणु को शासन। मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर संविधान का प्रारंभ उस समय से। संविधान आखिर क्या है? संविधान शासक और शासित के बीच का वो अनुबंध है जिससे शासित ये अपने अधिकारों को सुरक्षित रखता है। संविधान की कल्पना जो यूरोप की है वो मैग्ना कार्टा से आ रही है। मैग्ना कार्टा थी उस समय के शासक जो यूरोप में लुईस है और तब के बैरन्स के बीच की युद्ध को समाप्त करने एक चार्टर था जिसमें सारी शर्तें थी और वो चार्टर धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया जैसे जैसे शासक आए उतनी शर्तें। बाद में जब क्रांति हुई फ्रांस में और वो हुआ तो उसको संविधान का रूप दिया। लेकिन भारत के अंदर ही संविधान कि शासक अपनी सीमाएं और मर्यादा पृथु के समय और ये सारी प्रतिज्ञाएं जो पृथु ने की महाभारत में पढ़ने। एक चीज जो साइंटिफिक है कि दंड के बाद दंड नीति जो है ये राजनीति का दूसरा नाम। जितने भी हमारे यहाँ आपको अर्थशास्त्र मिलेगी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कोई अकेला नहीं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा कि मेरे से पूर्व अनेकों लोगों ने अर्थशास्त्र लिखा और जो मैं कर रहा हूं वो उनका सार निचोड़। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र
का जो समय है वो करीब 900 ईसा पूर्व माना जाता है, 1200 ईसा पूर्व। तो उसके अंदर आप सोचिए आज से 5000 साल या 4000 साल पहले कौटिल्य ने हमारे देश में अर्थशास्त्र और हर चीज का नियम थे। आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अगर आप पढ़ें तो शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसके ऊपर उन्होंने नियम और कानून, जंगल के नियम, विदेशों से संबंध बनाने के नियम, युद्ध के नियम, व्यापार के नियम, अगर कोई कम तोलता है तोल के नियम, जिसको आप वेट्स एंड मेजर कहते हो, कोई ठगे करता है, कोई वेश बदलता है, कोई मुद्रा बनाता है, राज्य के मुद्रा का वो करता है, एक मुद्रा बनाता है, कोई विषय आप सोचिए उसके ऊपर आपको अर्थशास्त्र के कानून मिलते हैं। और इतना विस्तृत, और अर्थशास्त्र को उसने बुक्स में करके हर विषय के ऊपर अलग से कानून। तो इतने विस्तृत कानून भारत के अंदर आज से करीब 4000 साल पहले सोचे गए, लिखे गए, उनकी कल्पना की गई कि जनता के अंदर ये सारी चीजें। तो महाभारत के अंदर ये उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने जो नीति शास्त्र बनाया उसके अंदर सभी विषयों पर उन्होंने कानून बनाए, नियम बनाए कि ये नियमों का आपको पालन करना। धीरे धीरे हमारे ये जो साहित्य है, जो ग्रंथ है, वो काल के साथ लुप्त हो गए, कुछ अंश रह गए जो बाद में नीति शास्त्रों, अर्थशास्त्रों के और नीति शास्त्रों हमारे सामने। वो क्या व्यवस्था है? कानून को हमने नीति शास्त्र में लिख दिया, फिर उसके बाद स्मृतियों में आ गए, स्मृतियों के बाद उनके टीका, उनके ऊपर निबंध। जिस प्रकार हम कोशिश करते हैं कि हमें सरल भाषा में चीजें समझ, हमारे संविधान में एक एक शब्द को लेकर के खूब विवेचना होती है और उसकी व्याख्या की जाती है, और हर सुप्रीम कोर्ट की बेंच अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करती है। व्याख्या के अनुसार 1947 से अब तक संविधान को, कानूनों को परिमार्जित किया गया, बहुत से कानून अपना रूप बदल गए। इसमें व्यक्तिगत विचार भी संविधान के अंदर आ गए और संविधान की मूल जो आशय थे वो कभी बहुत पीछे भी। तो इसी प्रकार जो हमारी स्मृतियां हैं वो समय और काल के अनुसार बदलती रही, लेकिन इन स्मृतियों में आप एक विशेष चीज देखोगे कि हमारे जितना भी साहित्य है जो धर्म और इससे है, ये राजा से प्रेरित नहीं, इसमें राजा की कोई आज्ञा नहीं, ये विद्वानों द्वारा समाज के अंदर रहते हुए, समाज का अध्ययन करके हुए उन्होंने स्मृतियों को लिखा, स्मृतियों की रचना की। और ये स्मृतियां न केवल कालखंड के अनुसार बदली, अपितु भूखंड के अनुसार भी अलग है। अन्य राज्यों में, भारत के बहुत से राज्य थे, अगर 500-600 भी राज्य मानते तो कहीं कोई स्मृति चलती थी, कहीं कोई स्मृति चलती थी। और जब स्मृतियों में क्लैश होता था तो जैसे दीपक जी ने बताया कि एक तो जो
निर्णायक है, जो निर्णय दे रहा है, उसे ये देखना होता था कि क्या ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और भी थी कि उस समय समाज में क्या व्यवहार प्रचलित था, क्या कस्टम थी। तो स्मृतियों में विरोध होने पर भी और स्मृतियों के अनुकूल ना होने पर भी जो कस्टम, जो उस समय के रीति रिवाज थे, उन्हें प्रमुखता दी जाती थी, अगर वो किसी धर्म के विरुद्ध नहीं। कसौटी ये होती थी कि हमारा व्यवहार धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अर्थात नैतिकता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कसौटी कभी नहीं थी कि स्मृति के विरुद्ध ना। बहुत बार जो हमारी कस्टम होती थी वो स्मृतियों से मेल नहीं खाती और उसे कानून मानते। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, देखिए कानून बनने की तरीका है। एक तो यूरोप के अंदर ये हो गया कि कानून का स्रोत राजा होता है, ये भारत में कभी रहा ही। भारत में इस कानून का स्रोत राजा कभी नहीं। भारत में कानून का स्रोत ऋषि मुनि थे, जो समाज को समझते थे, समाज के अंदर रहते थे और समाज को चलाते थे। भारत की परंपरा ऋषि मुनि चलाते। ऋषि मुनि हमारे उस समय के विद्वान लोगों का, तो वो चलाते थे। समाज उनके पास जाता था किसी अपनी समस्या लेकर। इसीलिए जो हमारे यहाँ के मूलभूत न्यायालय थे वो क्या थे? कुल न्याय, श्रेणी न्याय। कुल न्यायालय में आपके कुल के विरुद्ध समझदार लोगों को बिठा करके समस्या का हल करना और वो सलाह किनसे लेते थे? वो विद्वानों से सलाह। तो हमारे यहाँ जो नियम है वो उसका स्रोत राजा नहीं था, अपितु हमारा मूल नियम ये था कि राजा स्वयं धर्म के अधीन है। राजा धर्म से ऊपर नहीं। यूरोप का ये नियम किंग कैन डू नो रॉन्ग था, राजा कभी कुछ गलत नहीं करता। आज उनके नियम अलग है कि कानून सर्वोपरि है, लेकिन कभी ये नियम था। हमारे यहाँ पहले दिन से राजा कानून के अधीन, धर्म के अधीन, और राजा धर्म का विरोध नहीं करते। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जो शांतनु थे वो कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक कन्या पसंद आ गई, मत्स्य कन्या। वो उससे विवाह करना चाहती, उसकी मछुआरे की कन्या थी, वो विवाह करना चाहती। अब विवाह के लिए उन्होंने उसके पिता को कहा कि भाई आप जो है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, विवाह करें। उन्होंने कहा कि देखिए मैं इसका विवाह आपसे एक ही कर कि इसकी संतान की भागी राजा। अब शांतनु का एक बेटा है, देवव्रत। उन्होंने कहा कि मैं उसका अधिकार करती, तो वो चले गए। उन्होंने विवाह उसमें नहीं करना, विवाह शब्द के लिए नहीं माना। इससे एक छोटी सी चीज पता चली कि वो राजा था, मछुआरे की कन्या के साथ विवाह करना चाहता। अगर वो धर्म का पालन नहीं करता तो उसको कौन रोक सकता है कि वो उसे जबरदस्ती शादी में या उसको जबरदस्ती अपने महल में और उसको अपनी उसकी इच्छा के विरुद्ध ना बना। मैं ये नहीं कह रहा कि महाभारत काल में कानून का बहुत अच्छा शासन था या सभी लोग धर्म का पालन करते,
लेकिन ऐसे लोग थे, ऐसा समाज था जहाँ राजा हमसे बना था और वो प्रजा के प्रति भी धर्म का पालन करता था और अपने ऊपर भी धर्म। तो धर्म का शासन का अर्थ ये है, धर्म से देखें, मैं पहले भी कहता हूँ कि हमारा अर्थ कानून है, जिसको आज की भाषा में कानून कहते हैं। मैं धर्म उसी आशय में प्रयोग कर रहा हूँ। वैसे धर्म का बहुत विस्तृत है। धर्म का अर्थ काल और समय के अनुसार बदलता भी है। सच बोलना आपका धर्म है, लेकिन कभी ऐसी आवश्यकता आ सकती है कि आपको सच बोलना आपके पूरे देश को कष्ट में ला, तो आपका ये धर्म हो जाएगा कि आप उस सच को छुपा लें या अपना। तो वो जो है धर्म की परिभाषा अत्यंत विस्तृत है, उसमें नहीं है। तो हमारे यहाँ जो कानून है, जो धर्म है, जो जनता, वो जनता में से, वो जनता के व्यवहार में, और हमारे जितनी स्मृतियां, जितने भी ग्रंथ हैं, उनका स्रोत कभी शासन नहीं, वो हमारे विद्वान लोग थे और उन्होंने फिर हमारे यहाँ प्राकृतिक न्याय, हमारा पूरा जो वैदिक संरचना है वो प्राकृतिक के ज्यादा क्लोज, ज्यादा नजदीक है। इसलिए हमारे न्याय के अंदर भी प्राकृतिक न्याय हमेशा ऊंचा। हमारे न्याय का मूल सिद्धांत क्या है? दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रति चाहो, और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा आप अपने प्रति नहीं चाहते। जो गुण कोहली जी ने जबकि बताया, वो गुण एक साधारण व्यक्ति में होने चाहिए। उसे अगर वो ये चाहता है कि लोग मेरा आदर करें, तो उसे भी दूसरों का आदर करें। इसी तरह एक न्यायाधीश को भी ये करना होगा कि वो अपने सामने आए हुए पक्षों का आदर करें। फिर न्यायाधीश को भी कभी न्याय से धर्म से ऊपर नहीं सकता। आज विडंबना ये है कि हमारे न्यायाधीश अपने आप को न्याय और धर्म से ऊपर मानते, कानून से ऊपर मानते, जबकि हमारे शास्त्रों में, हमारी जो व्यवस्था थी, उसके अंदर न्यायाधीश एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही था। वो अपने कर्तव्य का पालन करता था। न्यायाधीश होकर उसका ये विशेष अधिकार नहीं था कि वो धर्म से ऊपर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस प्रकार बाकी सरकारी कर्मचारियों को घूस, उत्कोच और अन्य व्यवहारों के लिए दंडित किया जाता था, उसमें न्यायाधीश को दंडित करने के लिए वैसी व्यवस्था। न्यायाधीश अगर सही गवाही नहीं लिखता, गवाह कुछ कह रहा है वो कुछ, क्या गवाही आने के बाद भी वो उस गवाही के आधार पर निर्णय नहीं देता, या अपने अदालत में आए हुए गवाहों को गवाही देने नहीं देता, तो वो न्यायाधीश दंड का भागी होता है। उसे सिर्फ सेवा मुक्त नहीं किया जाता, उसको दंडित किया जाता और वो दंड किया जाता। साईं दीपक जी ने कहा कि दंड नीति मुख्य घोषणा। दंड नीति के अंतर्गत ही हमारे देश के अंदर अर्थ और काम आते थे। अर्थ और काम को दंड नीति का सबऑर्डिनेट माना। अर्थ और काम दंड नीति से ऊपर नहीं, और दंड नीति राजनीति का प्रमुख स्थान। आप बनिए, खूब अमीर बनिए, खूब कमाइए,
खूब धन एकत्रित कीजिए, लेकिन नियम के अनुसार। आप अपनी अभिलाषाओं को, अपनी कामनाओं की तृप्ति कीजिए, लेकिन नियम के। इसलिए दंड नीति प्रमुख, क्योंकि दंड नीति समाज में व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक मानी। राजा का प्रमुख कार्य क्या था? दंड धारण करना। अर्थात जो लोग धर्म का पालन नहीं करते, कानून का पालन नहीं करते, उनको दंडित करना, और जिनको अपराध किया जाता है उनकी रक्षा। तो राजा का मुख्य कार्य ही यही था कि वो दंडित करे और ये देखे कि उसकी प्रजा सुख चैन से। राजा के कर्तव्यों में प्रजारंजन एक मुख्य कर्तव्य। प्रजारंजन का अर्थ है प्रजा को प्रसन्न का मतलब धर्म के अनुसार। तो इस देश में न्यायिक व्यवस्था का मूल जो था वो प्राकृतिक नियम, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे का आदर करना और धर्म का पालन करना, ये था। न्यायालयों की रचना भी इस हिसाब से थी और न्यायालयों में न्याय भी इसी प्रकार होता और न्याय के लिए राजा के दरबार हमेशा खुला था। ये नियम था कि राजा प्रतिदिन अवश्य कुछ समय न्यायालय को देते। राजा के पास और भी अनेकों कार्य, लेकिन न्याय के लिए उसे समय निकालना। न्याय के अनेकों कहानियां हैं, कैसे राजा न्याय करते थे, मैं उसमें नहीं जाना, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी वो लोगों के अत्यंत समीप थी। उस समय लोगों को अधिक अच्छा न्याय मिलता था। आज की व्यवस्था को देख करके तो ये लगता है कि हमें अपनी व्यवस्था में कहीं सुधार की आवश्यकता है। अगर आज एक 50 रुपए का केस या 20 रुपए का केस 20-20 साल चले, तो आप सोचिए कि हम न्याय व्यवस्था के बारे में क्या करें। और इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम अपने इतिहास को खंगालें, उससे कुछ सीखें, इसलिए कि हम अपने इतिहास को नकारते जा रहे। हमारा दुर्भाग्य रहा कि पहले तो मुगलों ने हमारे साहित्य को नष्ट किया, हमारे पुस्तकालय जलाए, जहां जहां उन्हें हमारे ग्रंथ मिले, ज्ञान के, उन्हें ज्ञान से क्या की चिड़ थी, क्या था कि वो उन्हें जलाते। अंग्रेजों ने हमारे ग्रंथों को लांछित कर दिया, वो इनके ऐसे अर्थ निकालते कि ये इन जैसा भारतीयों जैसा गवार तो कोई था ही। तो उन अर्थों को आज बदलने की आवश्यकता है और ये बताने की आवश्यकता है कि सही अर्थों में हम अपने संस्कृति को और अपने इतिहास को पहचानें। Just take 1 minute, just 1 minute, Sure. just to add to what have is. time. Yes, please. So, just to add to what Justice Jibra has presented. So here is an extract from Bharat Upanishad, which I had the good fortune of citing in the second book, because it actually touches upon two aspects. One is what we understand of the Varna Vyavastha is so distorted, and to think that it applies only to the human society is a fault. How it applies even to the Devas comes out from the Bharat Upanishad. But secondly, how dharma effectively functions as a lagan on the hands of a kshatriya who has become a tyrant. Because the one who has the sword, if he does not have a moral code binding him, he is a mercenary, he is a killer. And given his bloodlust, there is really nothing that holds him back.
And here, I just want to quote a few English translations, and I think English is a poorer language to translate Sanskrit, but since we all happen to be educated in English, at least that's the goal, so I might as well cite it in that. So, the first shloka is, in the beginning, before creation, the whole cosmos was indeed Brahman, the one and only. Being the only one, he could not scaffold or hold the cosmos. He created further an excellent form, Kshatriyahood. Those Kshatriyas among the gods. Now, who are represented as Kshatriyas among the gods? Indra, Varuna, Soma, Rudra, Parjanya, Yama, Mrityu, and Isha. Therefore, there is none higher than Kshatriyahood. Hence, the Brahmana upholds the Kshatriya from a lower position in the Rajasuya sacrifice. He imparts that glory to the Kshatriya. The Brahmana is the source of the Kshatriya. Therefore, although the king attains supremacy in the sacrifice, at the end of it, he resorts to the Brahmana, his source. He who destroys the Brahmana strikes at his own source. He becomes more wicked as one is by destroying the enlightened. Exactly what Sir said. And the second verse, so that's not where creation stops. The next stage is, yet Brahman could not scaffold the cosmos. So after the creation of the Kshatriya and the Brahmana, he still couldn't contain creation. He further created Vaishyas, which are called Kanasa. Now, these are the species of gods who are designated in groups. Hence, trade guilds. The 8 Vasus, 11 Rudras, 12 Adityas, 13 Vishvedevas, and 49 Maruts. These are known as the Vaishyas among gods. But still, the creation could not be contained. Despite the creation of the so-called UCs, the creation could still not be contained. Yet Brahman could not scaffold the cosmos. He further created the Shudra Varna. Now hold here for a moment. What is referred to as Shudra Varna in this particular verse? It means Pushan, and Pushan means earth. That's where the word ocean comes from. The earth is Pushan, for it nourishes all that exists. Now, if earth is seen as the one that sustains everyone, and earth is given the status of Shudra in the Varna system, so to speak, please ask yourself if there is a need to recalibrate what we understand of the Varna Vyavastha. Then, yet Brahman could not scaffold the cosmos, as he was doubtful about controlling the ferocious Kshatra of the Kshatriya. He further created Dharma. This Dharma is the controller of Kshatra, hence there is nothing greater than Dharma. This is effectively the architecture. Now I leave it to the audience to draw your own inference. Thank you. So this is Bharat Upanishad. This reference, I'll share the reference. तो हमारे तीनों समय सारथी समय के इस रथ को महाभारत से लेकर चाणक्य से लेकर आज के समय सेक्टर 8 आरकेपुरम ले आए हैं। अब कुर्सी की पेटी बांधे रखने का संकेत समाप्त हो गया है, तो अपने प्रश्नों को खड़ा होने दें और स्टेज तक आने दें। मैं माइक ऑडियंस तक लेकर जा रही हूँ। आपके जो भी प्रश्न हैं उन्हें तैयार रखें और हमारे तीनों स्पीकर से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं प्रेरणा मल्होत्रा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। पासी कॉलेज है, रामलाल आनंद कॉलेज, उसमें पढ़ाती हूँ। एक तो मेरी ये था कि इतना अच्छा आप सभी लोग बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अगर रिकॉर्ड कर दिया जाता तो लार्जर ऑडियंस तक पहुंच सकते थे। ये तो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और मेरे मन में एक प्रश्न आता है, बहुत बार आता है, और मैं सोच रही हूँ कि उसका संभवतः कोई आपसे उत्तर मिल जाए। वो ये कि हम सभी लोग मानते हैं कि कॉलोनाइजर्स आए, उन्होंने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर्स बनाए, वो चाहे समाज को लेकर हों, कानून व्यवस्था को लेकर हों या और हों।
वो चले गए और हम ये मान लें कि हम डीकोलोनाइज्ड हो गए, वो तो आज तक नहीं हुए, बल्कि ऐसा कहें तो पूरे विश्व भर में, विश्व के अधिकांश देशों में जो आज स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं वहीं से उनका स्रोत आता है। आपने लॉ की बात की साई दीपक जी, तो टॉट का बताया और कहाँ से, बाइबल से आता है। इसी तरह से दुनिया भर के स्ट्रक्चर वहीं से गाइड हो रहे हैं आज भी, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हों, चाहे वो इकोनॉमी के हों, चाहे वो लॉ के हों, बहुत सारे हों। तो ये सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? मतलब हमें प्रॉब्लम पता है कि हाँ, ये सब जो रूल कर रहे हैं आज वो, जिसको राजीव मल्होत्रा जी कहते हैं कि जो वेस्ट का हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट हो गया है, अब वो वाशिंगटन डीसी चला गया, वहां से कंट्रोल हो रहा है। तो समस्या पता है कि सारे स्ट्रक्चर उन्होंने अपने हिसाब से, अब हमारी यूनिवर्सिटी आईआईटी में एडमिशन होना मतलब किसी भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से एडमिशन होने से मुश्किल है, लेकिन हम रैंकिंग के स्ट्रक्चर्स उनके बनाए हुए हैं कि हमारी भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप की 200 में नहीं आ पाती है। तो इसी तरह से हर एक चीज के स्ट्रक्चर उनके बने, तो कहाँ से इसका तोड़ निकाले, मतलब समस्या कहाँ से सूझी? धन्यवाद। मैं तीनों महानुभाव There are elements of agreement and disagreement. So the southern meal starts with a sweet, the northern meal ends with a sweet. So I'll start with a disagreement because I'm in the north, and then I'll come to the agreement. आप जो कह रही हैं यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग्स के बारे में, to some extent I will agree that उनके रैंकिंग के स्ट्रक्चर में अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन करने का एक मंशा तो है. So when they come out with university rankings in the West, I agree with you. But as a product of these institutions, I have to say that entrance जितना मुश्किल होता है, अंदर जाने के बाद it is not as rigorous in terms of research, in terms of the number of publications that come out of it, in terms of patents, in terms of startups. इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए 2007 से in every IIT there's been a massive change. We are moving in that particular direction, but we have still not moved in it. I can say this as an engineer turned litigator who has participated in both worlds. तो उस दिशा में अभी तक वहाँ पे, so my last talk last week was at the IIT Madras Research Park. Incubation का जो concept है ये नया है. In भारतीय academia में publication is valued more still compared to coming out with patents which have a commercial value based on the technology. इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ एक्चुअली प्रपोज किया था, जहां पे ये कहा गया था जितने भी ग्रांट्स आपके आते हैं, पब्लिकेशन आप अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के लिए जरूर छापिए, लेकिन आप उसके साथ पैटेंट को भी अप्लाई कीजिए एंड सी इफ देयर इज अ वे ऑफ कमर्शियलाइजिंग इट. उस लॉ का इतना खटल हुआ, इतना ऑपोजिशन हुआ, बिकॉज नोबडी वांटेड टू बी अकाउंटेबल फॉर द मैनर इन व्हिच द फंड्स वर बीइंग स्पेंट and to show that something concrete came out of it. ये भी एक reality है. So there are two simultaneous realities. One is that the West uses rankings to preserve its dominance. The second also is there is a lot of change required in terms of our own attitudes. These two simultaneous realities एक दूसरे को काटती नहीं है, दोनों ही valid. So that is one suggestion. But coming to the larger question that you have raised, I completely agree with you. But इस problem के तीन stages हैं, which I have tried to spell out in multiple places. First is an awareness of the problem, which is from unconscious you become conscious of the existence of the problem. Second is diagnosis, which is to understand the extent of the problem. Third is prognosis. Therefore, prescription. उपचार क्या है इसका, इस रोग का.
प्रॉब्लम ये है अवेयरनेस में आज के डेट में भारतीय समाज में कंसेंसस नहीं है. Very few people unfortunately agree with your position, my position. क्योंकि ये पोजीशंस अभी पॉलिटिकल कैंप्स और विचारधारा के कैंप्स में इनको आपने लेबल कर दिया है. And the fact that all of us are affected by it cannot be accepted by most people, because as you rightly said, a lot of people in this country continue to be not just ambassadors, paid ambassadors of the West. But let me also say that is everything from the West evil? That can't be accepted. Is everything from the West strong? That can't be accepted. But the most important point जो आप भी कह रही हैं और जो मैं कह रहा हूँ, वेस्ट हमारे साथ संवाद नहीं करता है क्योंकि संवाद सम के बीच में होता है. He doesn't think of you as an equal, and therefore that is the fundamental problem. The West can think of it maybe because of the last 500 years history, but when Indians themselves think that we don't have the right to ask for an equal place as the West, तब आप उनके साथ नहीं लड़ रहे हैं, आप अपनों के साथ लड़ रहे हैं. तो जब तक भारत में इस विषय पे कंसेंसस आना चाहिए या फिर मेजॉरिटी को प्रिवेल होना चाहिए. That means at least most of the people agree with this, even if consensus is not possible. We are unfortunately at step 1. Some people are working towards both creating awareness as well as providing solutions and identification of the problem. But इसको कौन सुनेगा, इसको पॉलिसी लेवल में कौन अमल करेगा? क्योंकि the reality of the modern state is that the state has the biggest capacity to create a multiplier effect for any idea, or you need a fantastic private backer to push it. Private backers को कन्विंस करना इसलिए मुश्किल होता है because they are going to ask for return on investment. सांस्कृतिक reasons उनके लिए काफी नहीं होंगे क्योंकि उनकी रुचि उसमें नहीं होगी. और जो बिना ROI के कर सकता है वो है स्टेट, because that is what the public money is meant for. कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं करेगा, एटलीस्ट पब्लिक इन्वेस्टर करेगा, which is the government. लेकिन जो गवर्नमेंट करना चाहेगी उसके खिलाफ रिक्त स्थान को आप पूरा कीजिए, डैश करण का एक ठप्पा लग जाएगा. ये क्या करण है आप देख लीजिए, वो एक रंग है. That will be the allegation. Now I don't know the audience I'm in, and therefore I'm being very, very diplomatic in what I'm saying. Otherwise I'm not known for holding back punches. I'll be very, very clear about what I'm saying. केसरिया रंग बहुत लोगों को पसंद नहीं. That is unfortunately the reality. So how do you deal with this? We are being told that इस civilization का अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है. It cannot have it also because it is an artificial civilization, is what we are being told. And this is the top of an independent India, not a colonial India. Colonial Bharat was much more swatantra and confident of its culture than independent India. The difference between India and Bharat. So I don't know what to say. And we are having this discussion, unfortunately, in the 75th year of independence. So we have gone terribly wrong in the last 75 years. And I blame it not just on the political structure, I blame it on the education structure. I blame it on the lack of that spiritual institutional safety network that we had created for millennia together. All of that has been systematically destroyed in independent India, by independent India, by the Indian state. There, I've said it. Ab iska jo controversy bane, no problem. That is what I have tried to talk about, because I am perhaps in the most colonial institution possible as a practitioner of that particular institution. जहां पे आपको सर्वोच्च न्यायालय में ये बोला जाता है कि हिंदी यहां पे नहीं चलेगी. 2 महीने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में एक लड़का, he wore a fantastic white shirt, black coat, he had the cravat, the bow tie, everything. He made the unfortunate mistake of wearing a dhoti and coming to court. I don't think even an alien would have drawn that kind of steps. And the unfortunate reality is, Westerners found it very interesting. The foreign clients sitting there saying, "This is fantastic, this is great." It was the Indians staring at me. I have pointed out that Africa is doing a better job of reclaiming its roots and repelling certain influences of the West and the imposition of the West
that the seventh largest republic and the second most populous and perhaps the largest populous country in the world. This is the reality. तो ये population और size की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है. It's a mindset that needs to be addressed. And unfortunately, problem का solution 75 साल के बाद शुरू हो रहा है, तो थोड़ा catching up तो है. But you're not fighting against 75 years of investment. My suspicion with evidence is that it's a 270-year investment in this particular direction. So I'm fighting against 3 centuries of investment. I don't know what will happen, but all I would say is, fortunately, some of these voices have finally found space. तो तारे बदल रहे हैं. अब किस दिशा में बदल रहे हैं, ये फ्यूचर बताएगा. I like to add, please. जी नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश त्रिपाठी है, मैं लॉ स्ट्रीट जर्नल में एडिटर हूँ. मेरा सवाल दीनरा जी से है. अभी आपने सब बताया और कोहली साहब ने भी बताया कि जो प्राचीन काल था और प्राचीन काल में भारत में ग्रामीण स्तर पर जुडिशियल सिस्टम था, सारी चीज़ें थी, लेकिन वो बाद में कैसे क्या व्यवस्था हुई, वहाँ लोगों को रोजगार भी था, कारपेंटर भी वहाँ रोजगार पा जाता था, लोहार भी रोजगार पा जाता था, सब लोगों को रोजगार था, सबका सम्मान था. अब अचानक सारी चीजें बदलती गई और अब जो है इस समय, उस समय तो कॉलेज भी नहीं रहे, यूनिवर्सिटीज भी नहीं रही, स्कूल भी नहीं उतने होते थे, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ है, सब कुछ बढ़ा हुआ है. लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो तनावग्रस्त हैं, जो 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 उनको रोजगार नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं. और जिस तरह से कानून बन रहा है, मैं चूंकि 25 साल से पार्लियामेंट कवर करता हूँ, जल्दबाजी में कानून बना दिया जाता है, हाथ उठा के उस पर डिस्कशन नहीं होता है. मेरा सवाल यह है कि जैसे प्राचीन काल में लोगों को रोजगार, न्याय जो है गांव के स्तर पर मिल जाता था, क्या कोई ऐसा प्रयास होगा, किसी को कुछ उम्मीद है कि अब भी न्याय जो है ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध हो पाएगा? देखिए, इस देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है उसमें परिवर्तन और उसमें सुधार सिर्फ न्याय व्यवस्था स्वयं ही कर सकती है. संसद के किसी भी ऐसे प्रयास को न्याय व्यवस्था बड़े संदेह से देखती है. तो ये प्रयास न्याय व्यवस्था के अंदर से हो कि वो न्याय को सुधारें और इसे जल्दी देने की कोशिश करें, जनता के समीप ले जाएं, तो संभव है. अन्यथा जो आज की परिस्थिति है, मुझे नहीं लगता कि न्याय व्यवस्था अपने अंदर सुधार करना चाहती है या दूसरों को सुधार करने की कोशिश भी करने देना चाहती है. तो इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी कि जब हमारी न्याय व्यवस्था, कुछ न्यायाधीश ऐसे हों जो बढ़ कर के इनिशिएटिव लें और करें. अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें मुझे ऐसा संभव नहीं लगता कि कोई ये जल्दी न्यायिक सुधार होने की संभावना. नमस्कार, मेरा नाम राजशाबला है, मैं 5 जनवरी में जी कहिए. I just wanted to add two things. One, my personal experience when I briefly worked at the United Nations in the WIPO office. You see, the Indians are very well respected at that forum. Each time when the representative of India was there, the house was always full, whether it was General Assembly or even at the Security Council. They were given a good hearing. And the kind of respect which they commanded was far more than even the developed countries' representatives. And then, number 2 point is that most of the new economy companies are now headed by Indians, and Indians who have been at IIT. So I don't see we need much more writing than this. This is a practical outcome of what we have been doing so far. And I think it's more creditable. Putting the face of the pudding is in eating, so it's actually been demonstrated. Are you saying that the system that has existed so far is good? I am not saying that the system is good or bad.
but the outcome is not bad. I see. Okay. Fair enough. Then perhaps we just need a couple of more CEOs sitting on the top of MNCs, actively working and using their own positions to finish whatever remains of this culture. And then perhaps we might actually applaud the system for what it is produced. Because the entire point of the cogitation is not to prove that the system has failed at producing material success. The point is that material success is not a benchmark to determine whether a civilization is confident of its own self. That just happens to be one of those areas. And if anything, I genuinely believe that regardless of the government, and sometimes even despite the government, Bharatiyas have always been fantastically entrepreneurial. They know how to generate wealth, which is why we have been able to survive even the bad old days of pre-liberalization. Okay, post-liberalization, and that particular phase was almost treated as what was called the HRR or the HGR. The Hindu growth rate was the abomination given to it. And post-liberalization is when our potential was completely unleashed. My suspicion is, now that material needs are being gradually addressed, and therefore what they call Maslow's needs are being addressed, finally the society has the time to look at its cultural position and its civilization position. And therefore, अगर liberalization थोड़ा जल्दी हो जाता, शायद ये बातें थोड़ी जल्दी आ जाती. And because of the delay in the liberalization, these questions are being asked at this particular stage. I think individual success of Bharatiyas at different places is not because of the system, but perhaps because they are inheritors of a fantastic legacy in their own communities in very different ways, which is reflected in who occupies certain positions, who has managed to go to a certain place. The education system, all of us are products of it, so I'm not going to sit and say it's been completely useless. But the fact is, since it's always been a knowledge-driven society, regardless of whichever system we've been through, we somehow seem to come at the top of it, whether it's the United States or here or Japan or Russia or wherever it is. So there I would perhaps say it has been more to the credit of the individual and the inheritance and less about the system. But the system, in my humble opinion, has a lot to be done and there is a lot to be addressed there. Now, in fact, between my generation and the current generation, I finished my 10th standard in 2000, my 12th in 2002, engineering in 2006 and law in 2009. Between that and this generation, there's a vast gap in terms of rootedness. No wonder the strife that you see on campuses is a direct product of what is being told, and especially in humanities departments. As an engineer who went to do a humanities program in IIT Kharagpur, trust me, we had trouble convincing the management at that point that at least give us one vegetarian mess because it was converted into a religious issue. That's the kind of trouble. A vegetarian mess that existed for several decades was sought to be changed. To say, sorry, this kind of dash current is not possible in this country. That was what we were being told. I was just talking about the competence. It's the production of competence. I understand. Competent people, because the respect that the UN was of competence. I understand. I completely understand. Because of the competence, the people are hired as a CEO. I think competence is never in question. So, competence is definitely an outcome Correct. of culture plus the inputs that the existing system has brought about. Maybe that I means a would long not say conversation. our system is terribly bad. Yes, we can definitely improve upon it. Okay. Thank you. We have our next question. थैंक यू. मेरा सवाल जस्टिस प्रमोद कोहली से. मेरा नाम राज चावला, मैं 5 जनों में सलाहकार के रूप में. जस्टिस कोहली, मेरा जैसा मानना और सामान्य मानवी भी मानता होगा, न्याय की अवधारणा न्यायाधीश के लिए तथ्यों से शुरू होती है, तर्कों पर आती है, बुद्धि से काम करते हैं और विवेक पर आधारित न्याय होता है. सामान्य मेरी समझ. आपने कुछ प्राचीन भारत के विषय में बताया था, वहां से कुछ गुण लेने चाहिए थे. वो मर्यादा थी, वो निष्ठा थी, इंटीग्रेशन आपने कहा, और एक शब्द पर आपने बहुत जोर दिया, ऑनेस्टी. सत्यता कहें, ईमानदारी कहें, उसमें दोनों शब्द आ सकते हैं. आपसे चाहता हूं, आप जब उत्तर दें तो अपेक्षा यह है कि इस ऑनेस्टी का क्वेश्चन 100% आप में है, इसको 200% इसकी डोज कर लें प्लीज. आज के संदर्भ में न्याय की जो व्यवस्था, जिस तरह के न्याय आते हैं, जिस तरह के निर्णय आते हैं, उनको सुनकर के अलग अलग प्रतिक्रिया भी होती है. एक बहुत अच्छे न्यायविद ने मुझे कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय हो जाता है. ये किसने कहा? ठीक है, क्या ये आप मानते हैं आज की न्याय व्यवस्था में जिस तरह के निर्णय आ रहे हैं,
क्या उनको देख करके आपको लगता है कि प्राचीन भारत की उस न्यायिक व्यवस्था के वो गुण और उसमें सर्वाधिक ईमानदारी, सत्यता, इसकी आवश्यकता है? दूसरा, मेरे सवाल का दूसरा प्रश्न वो ये कि प्राचीन भारत में जिस तरह से न्यायाधीशों की इंटीग्रिटी, या आपने कोर्ट स्टाफ तक की बात की कि उनकी इंटीग्रिटी भी चेक की जाती थी और तब जाकर के होता है, आज न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह की है? जैसा जस्टिस झिंगरा ने कहा कि वो अंदर से ही होना चाहिए, वो मानता हूं, लेकिन हमें आज की स्थिति पता होनी चाहिए, इसलिए आपसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा कि वो स्थिति क्या है। एक इसमें तथ्य ये भी आता है, यदि आप सहमत है तो कहिएगा, कुछ परिवारों की बंधक बन चुकी है भारत की न्याय व्यवस्था, खासतौर पे नियुक्तियों के संदर्भ में भी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संदर्भ में भी। धन्यवाद। आपके प्रश्न के दो पार्ट हैं। एक तो सबसे पहली बात जो कि जो प्राचीन काल में इंटेग्रिटी की बात को महत्व दिया जाता था, क्या वो आज है या नहीं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैंने 1972 में जम्मू में प्रैक्टिस स्टार्ट की तो हमारे वहाँ एक 7-8 कोर्ट होते थे। एक जज साहब की नियुक्ति हो गई जिनके बारे में उनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल थी। तो वहाँ बार एसोसिएशन, छोटी सी बार एसोसिएशन थी, तो स्ट्राइक हो गई कि अब ऐसा आदमी यहाँ जज बन के आ गया जम्मू सिटी में जिसकी इंटेग्रिटी थोड़ी डाउटफुल है, तो हम काम कैसे करेंगे। आज ये पोजीशन है, अगर एक ईमानदार जज उस जगह आ जाएगा तो स्ट्राइक हो जाएगी, आप काम कैसे करेंगे। मैं माफी चाहता हूं अपनी कम्युनिटी से भी और आप सब लोगों से। जो रिपोर्ट्स हैं, एक जमाने में लोग जो थोड़ा बहुत गलत काम करते थे वो छुप छुप के करते थे कि किसी को पता न चले। आज लोगों ने अपने गले में तख्ती लगाई है कि मैं अवेलेबल। आज ये पोजीशन है। आज आप किसी कोर्ट में चले जाएं, मैं फिर माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे, आपको दलालों की लाइन लगेगी, मिलेगी, जो ये कहते फिरते हैं कि बताइए काम क्या है, मैं करा सकता हूं। मैं वकीलों से भी माफी मांगूंगा, मैंने भी 28 साल वकालत की है। कुछ वकील लोग भी ऐसा काम करते हैं। सिस्टम को हमने खुद डिस्ट्रॉय किया, सिस्टम को बाहर से आके किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया। किसी लिटिगेंट की हिम्मत नहीं है जुडिशियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की। जुडिशियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया जुडिशियल सिस्टम के अंदर बैठे लोगों, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो। तो कहने का मतलब यह है कि इंटेग्रिटी जो एक जमाने में सबसे पहली क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन गिनी जाती थी, आज वो नहीं रही। एक फैसला कानूनी तौर पर, वाकयाती तौर पर ठीक भी हो, लेकिन अगर मोटिवेटेड है तो वो फैसला करे। आप फैसलों की बात करते हैं, फैसला नियतन अपने दिमाग से गलत भी हो तो वो फैसला ठीक है, लेकिन फैसला ठीक भी हो लेकिन नियतन गलत हो तो वो फैसला गलत है। ये मेरा मानना है। तो हम इस चर्चा को जब तक सिस्टम खुद इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा तो सिस्टम को बाहर से ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आज कुछ चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से फैसले लंबित हैं, जजों की कमी है, जजों की अपॉइंटमेंट, जैसे डिगरा साहब ने भी कहा, जो जिस जजमेंट के बेस पर कॉलेजियम सिस्टम बना, 3 जजमेंट हैं, 93 की, 98 की, 99 की। वर्ल्ड के 6 कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया गया उसमें, जो जजमेंट हैं जिसमें कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया। अगर वो जजमेंट आप पढ़ें, वो 6 कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप एग्जामिन करें तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस अपॉइंट नहीं करते। All the 6 constitutions which were referred to by the Supreme Court do not permit the appointment of the judges by the judge. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा
अभी रिसेंटली जब गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बनाया, जिस कमीशन को बनाने के लिए पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया, 20 स्टेटों ने पास किया, उसको 5 जजों ने खत्म कर दिया। कैन यू जस्टिफाई? ये कौन सा सिस्टम है? देश चाहता है, देश के बुद्धिजीवी चाहते हैं, लेकिन 5 जजों ने बैठ के खत्म कर दिया। तो हमें सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। आज मुझे याद है कृष्णा आयर साहब ने एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कुछ टाइम पहले, व्हेन ही वाज लाइव, उन्होंने कहा कि पहले जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी तो चीफ जस्टिस अगर कोई अपना आदमी लेके आना चाहता था तो वो देखता था कि आदमी ठीक है नहीं, चलो अपना आदमी कोई एक लेके भी आ गया, लेकिन बाकी जो अपॉइंटमेंट्स को बैलेंस करने के लिए बाकी जो अपॉइंटमेंट्स होती थी वो मेरिट होती थी। कहता आज 5 आदमी हैं, हर आदमी का एक 2 कैंडिडेट्स हैं, तो मेरिट इज इंसिडेंटल इन दैट इन अपॉइंटमेंट। मेरिट इज नॉट मेरिट, मेरिट में भी इंसिडेंटल। मेरा आदमी है, मेरा आदमी है, मेरा आदमी है, उनमें से हो सकता है तो मेरिट ऑब्वियसली हो जाए। So the question is, why can't we react? जब तक सिस्टम को ठीक करने के लिए समाज उठेगा नहीं, समाज रिएक्ट नहीं करेगा, तो सिस्टम चलता रहेगा। इसको ठीक करना मुश्किल, मैं तो कहता हूं नामुमकिन हो जाता है। 800 साल की गुलामी हिंदुस्तान की, चाहे वो इन्वेडर्स रहे हों, ब्रिटिशर्स रहे हों, हमारे माइंड क्लॉग हो गए, जंग लग गया। हम अपनी गुलामी की स्थिति से बाहर नहीं आ रहे, हमें उससे बाहर आना है। अभी जो मैडम जी ने भी बात कही कि हम क्यों किसी के मुकाबले में नहीं आ सकते, हम वहां तक सोचते ही नहीं है। हम उस गुलामी के, अपना जहन जो गुलामी का गुलाम जहन है हमारा, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते, हमें उससे बाहर आना है। This is my last question. Sir, I am Advocate Harshvardhan Sharma, and as ma'am said, ki our education system is moved towards Western a lot, and we have to follow them. And जैसे कि आपने कहा कि after independent India, our culture is deteriorated even more and on a faster pace. What my assumption and my presumption is कि it is because of the education system. We have ICSE, CBSE, and many other boards. We have madrasas. Even their children studying in madrasas can apply for IAS officers and justices. What I have observed that since my birth and since many long time, since 163 years, गुरुकुल और वैदिक प्रथा जो स्कूल्स की थी वो खत्म हो चुकी है। अगर कल को कोई गुरुकुल खोलना भी चाहे, उसमें हम अपने बच्चे भेजना भी चाहें, तो हमारी कोई नौकरी नहीं लगेगी, हमें कोई उसकी प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तो वेटेज नहीं मिलेगी। So do we, is this the need of the hour that now we need Vedic board in India to promote not just our culture, to be the Vishwa Guru what we were before? It is the question to all of you, sir. It will be my honor if you answer this question. Thank you so much. हर प्राप्ति के लिए, हर अचीवमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना है। अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि क्या मेरे बच्चे को IAS बनेगा या नहीं बनेगा गुरुकुल में जाने के बाद, या उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब आप इस डर को जीत लेंगे तो ये व्यवस्था लागू होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सैक्रिफाइस मैं नहीं करूं, मेरे पड़ोसी के करे, भगत सिंह मेरे पड़ोसी के यहाँ पैदा हो और आजादी मुझे, ऐसा नहीं। तो इसलिए शुरू करिए अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजना, और देखिए शायद आपका बच्चा सबसे ऊपर होगा। देखिए तो आजमाइए।
मैं थोड़ा सा जो डिंगरा जी ने कहा उसको ऐड करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा 2-3-4-5 सालों में कई स्टेट्स ने कहा कि हम अपने स्कूलों में बच्चों को महाभारत रामायण गीता पढ़ाएंगे, तो बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। हल्ला गुल्ला क्यों है भाई, मुझे बताइए। हमारे जो ग्रंथ हैं, मुझे किसी ने पूछा जी कि ये तो सेक्युलर नहीं हुआ, अगर आप महाभारत रामायण पढ़ाना चाहते हैं तो कुरान भी पढ़ाएं, बाइबल भी पढ़ाएं, इसमें क्या डिफिकल्टी? बात ये नहीं है। हम अपने देश में उन ग्रंथों को पढ़ाना चाहते हैं जो ग्रंथ इस देश के हैं। पहली चीज, महाभारत रामायण गीता इसी देश की धरती पर लिखी गई, बाकी ग्रंथ क्या हैं इस देश की धरती पर नहीं लिखे। वो हमारा कल्चर नहीं, वो हमारे ग्रंथ नहीं। हम अपने ग्रंथ नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे ग्रंथ पढ़ाएंगे। दूसरा, जो हमारे ग्रंथ हैं, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, वो किसी धर्म की जब हम बात करें, जैसे डिंगरा जी ने कहा, वो किसी रिलीजन की बात नहीं करते हैं, धर्म की बात करते हैं, राइटियसनेस। अब ये जितने ग्रंथ हैं, कोई मुझे पढ़ के बता दे कि ये हिंदू धर्म की बात करते हैं? नहीं करते हैं। ये धर्म की जो बात होती है वो राइटियसनेस की बात होती है, क्या ठीक है क्या गलत है, इसलिए क्यों नहीं पढ़ाई जाए? हमारे समाज में, हमारे कल्चर में, अपनी संस्कृति में हम अपने ग्रंथ नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरे ग्रंथ क्यों पढ़ाएंगे? और वो ग्रंथ जो समाज को सुधारते, जिन्होंने समाज को बनाया है, इंडियन कल्चर, संस्कृति हमारी इन्हीं ग्रंथों से निकली है। लेकिन कोई आदमी बोलता नहीं, समाज में रिएक्शन नहीं होती। मैं कहता हूं कि समाज को जागना पड़े। जब तक तो समाज जागेगा नहीं, ये स्थिति ठीक होने वाली है। Just take one shot at that. So sorry. So Sunday was Chhath. That is known as Shashti in the south. So which is basically used to worship Lord Kartikeya. It's Skanda Shashti, that's what we believe in. Whereas here it is Puja of Chhati Mata, as well as you're looking at Surya. If you come from the Bhuyan community in Bihar, then it's a different traditional. So usually in the south what happens is 9 days before Chhath, Veda Parayan starts. And there are different portions that they read over and over again because it is believed that it has a different let's say ramification, not for Hindu Kalyan, Lok Kalyan. That's the belief. So the person who teaches me some of these things, who I referred to earlier in my introductory submissions, since I was in Chennai for my book tour, he said, "You come, Prasad leke jao, attend it and go. It's very important." So I went. I was astounded at what I saw. I hope you find the answer to your question in this. It must be a family of about 10 or 11 people. The youngest in the family was about 6 years old, and he was chanting the Vedas, and he was teaching a 4-year-old. An 8-year-old was teaching the 6-year-old. A 30-year-old was teaching the 8-year-old. That's the age group. So I asked them, what about their modern education? He said, we will survive on NIOS, the open education system. Because our commitment is first to protection of this बीज रक्षा. क्योंकि अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो करेगा कौन? If they wanted, they could have simply made the switch using their brains and memory to any other stream, but they've chosen to surrender that family only to this. ऐसे बहुत सारी families हैं who are still protecting that. I personally know of doctors and entrepreneurs from New York City who have given up their lives and come back to Bharat, grown a shikha, and have become proper Vedacharyas to protect that particular culture. If you expect that the rest of the society is going to come forward to make it easy for you to protect your own culture, frankly speaking, that's not going to happen. Because at this point, whatever remains of this culture is being protected by those handful of people across the country. You have such groups across the country. They are the ones still protecting it. Therefore,
If you really wish to make the transition, or you want to straddle both worlds, I believe it is still possible for people like you and me to do that. But the fact will remain, you and I will be only second grade practitioners of that particular system, because our primary commitment is not to the protection of that system, but to livelihoods, our livelihoods. Permit me to say this. That is the fundamental distinction between a Vaidika Brahmana and a Laukika Brahmana. Because a Vaidika Brahmana focuses on protecting the Veda, the Laukika Brahmana focuses on protecting his livelihood. And that is why that particular position was given so much of importance, because their entire life is dedicated to protection of that particular system and structure through anushtanas and discipline throughout their life. Now you can always say, are there no people who deviate from that? Yes, that is a function of human error. That is not a function of systemic error. In every system you will find people who will deviate from it. But just as our mind veers towards finding out people who are exceptions or deviants from that particular path, surprisingly, our mind is not looking for positive examples of people who have given up this and have chosen to focus that particular core tradition and see it. After almost 1200 years of multiple ravages of time and history, if you still have these people who are committed to that particular structure, credit goes both to the system as well as people. And please remember, Dharampalji in his book has clearly pointed out that there were 500,000 Gurukulas by the time even the British entered this particular country. 5 lakh Gurukulas after close to 800 years of somebody wielding the sword and destroying libraries. Please look at that particular figure and then ask yourself what has happened after that. So for me, someone wielding the sword is better because at least you know what he is against. But when someone comes and says, I will come and reform you because your way of life is not worth living, because and then he starts talking about this value called tolerance. I'm extremely suspicious of such people. Hi, good evening, gentlemen. My name is Deepika Bharat. When we're talking about ancient culture and when we're talking about dharma, I think one unit that has existed for the longest of time and that has survived every test of time is the unit of family in India. And I personally feel that there are a lot of things happening from the judiciary that is posing a big question to this unit. Now, if I may share, in Joseph Shine's judgment, Justice Chandrachud said that married woman can make her own sexual choices. By marrying, she is not consented to refrain from sexual relationships outside of marriage without the permission of her husband. A husband is not the owner of his wife's sexuality. In the same breath, we have judgments from Supreme Court where they say that even if a man has to do physical labor every day, he needs to and is bound to pay maintenance to his wife. In 2017, Rajesh Sharma judgment came where I think where there was a long required some changes to the way 498A was being handled in the country, and they brought the concept of family welfare committees, which I think was a great idea, but because of the feminist agitation, that was taken down. Now my question comes from a recent statement by a gentleman who is going to be the Chief Justice of India, Justice Chandrachud, when he told the law students that they need to have a feministic thinking in the way they deal with law. My question is, what is this feministic way of thinking? And if this feministic way of thinking really comes anywhere at all from the dharma that this country has always had? Thank you. I'm sticking my neck out here in more ways than one. All I would say is that there are perhaps concerns at multiple levels. The first being that a person who is going to wield such a powerful position, having very clear positions on certain issues. As human beings, sure, all of us have our positions, but would we want to bring those positions to bear on the offices that we occupy? That's a question for everybody to ask. Because on one hand, we are being told constitutional morality is a real thing. On the other hand, we are being told that individual morality can pass up as constitutional morality depending on the office you occupy. May not be correct. Second, as a man
who argued on the protection of the Shabdalaya temple practice, I'm bound to be accused of misogyny. But since that accusation has already come my way, isse bura aur kya ho sakta hai? So I go further, which is that as far as Bharat is concerned, I think it's extremely condescending for you to try and import Western feminism to a community and a group that worships the divine feminine and which still continues to have that practice. Now, of course, the argument is going to be, are you saying does this obviate instances of sexual violence that happen across the board? No, nobody is saying that. Does this mean that every person who is walking is a Shiva? No. But please don't tell me that every woman walking is also a Devi. That's a very terrible accusation, because now we have effectively decided that one particular gender is full of villains and all, the other gender is full of heroes and heroines, sheroes to put in Bharat's language. Okay. Not true, not correct. Unfortunately, this discussion has lost all sense of proportional balance, and it has become about creating one large peer group which has no sense of originality and is busy importing stuff from the outside, doesn't ask what's happening on the ground. My hunch, suspicion is that this discussion has been hijacked by the well-fed, affluent elites who do not know what are the ground realities, who do not care for the ground realities, but they merely need credentials to effectively polish in their own circles. They have no idea how it happens. I might as well say this. I participated in the marital rape arguments, and I specifically took a position that the issue of marital rape, we are not against it being recognized, but at least realize that when a man and a woman effectively share an intimate space with nobody to witness, hopefully, what are the evidentiary standards that you're going to apply? How do you enforce this? It's going to be a who said this, she said this, tu main. And are you going to push people to install CCTVs in the most intimate places of our houses? Or do we sign long courtship contracts? Step 1, step 2, step 3. Is that the flow chart that we want? The problem is these discussions are happening with so much of passion that reason is almost missing. There's so much of heat that light has completely escaped this particular conversation. And no matter how much we try and say, all of us are born to women. It's not as if, regardless of the gender, we don't care for that person. I am a proud son of a very proud mother. I see myself as a very proud product of a woman with nerves of steel. This country has venerated powerful men born of strong mothers, whether it's Shivaji or anybody else. So be a bit more respectful of the society that you're engaging with. Don't start with a position of condescension. We are not savages for you to reform. Those days are gone. 3, I don't think the tentacles of this issue are limited to domestic organizations. It's going much, 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 much beyond. I'm not purveying conspiracies here. But when a New York Times and a Washington Post makes it a point to vilify the judge who took a dissenting opinion on the issue of marital rape, then clearly the tentacles are no more limited to this particular question. Right? And America, which is now overturned Roe versus Wade, is in no position to pontificate to Bharat. Exactly. Yeah. You've just taken a horrible position on abortion or a position that lacks this thing. I think both their positions are in extremes. One is driven by the Bible Belt and the other is driven by the liberals of New York or California for that matter. Nobody is actually talking from a position of perspective. So you certainly as a divided country don't get to pontificate to us. But independent of this posturing, the question is there a necessity to protect a woman within the confines of marriage? 100% yes. Is consent important within a marriage? 100% yes. Nobody is denying this. But the question is, are you going to ask the court to legislate on this particular issue? Then why make this particular issue an exception? Tomorrow the court can start legislating on everything under the sun. That is the larger issue that you have to consider. Second, even with respect to this issue, if you say that this issue deserves exceptional treatment, that means it deserves exceptional evidentiary standards. Which court has the power in this country or any other country to create evidentiary standards? That is legislation. That is effectively the realm of the legislature.
The interesting part is immediately after the arguments in this particular matter, one of the senior advocates of this country was kind enough to organize a public debate in central Delhi, in Lutyens Delhi, between me and another person who appeared as an amicus in the matter, who was a lady. Yes, of course, is a lady. So, as far as this discussion is concerned, in that small room, I was able to explain. And fortunately, there were some people who understood and saw the sense behind this, that this was not a misogynistic position, this was not a call for non-recognition of marital rape. It said, it's a different species, it needs special treatment, think more. But when the discussion and let's say the audience becomes larger, I think automatically attention span comes down, the ability to pay attention to bariki comes down, and you're only going to focus on rhetoric. 2015 is when that petition was filed in the Delhi High Court. 2022 Jan is when the court suddenly wakes up to take a decision on it. 3 months lightning speed, the hearings are conducted with zero representation from social anthropologists, marriage counselors, or anybody else. And those who wanted to participate in the proceedings to say, allow us to submit, we know what is happening. Nothing doing, we waited all along. The biggest fear are the consequences of airing this particular opinion. It's cancel culture. Ban, socially boycott. This is what happens ultimately. Jo hoga dekha jayega, doesn't matter. But in the process, you're right, the family unit is under attack from multiple places. And Dharma survives on the protection of the family unit. A dysfunctional family produces a bunch of wokes, and America is a textbook example of that. I say this loudly and clearly. It is on the path of implosion. I am not happy that America is imploding because I don't have any race hatred. And not just that, so many Indians are there. So what am I going to gain by actually wishing for the implosion of, let's say, America? I'm not interested in that. My scripture certainly doesn't ask me to hate anyone, fortunately. So I don't have a problem with that. And merely, my biggest worry is, we seem to be importing the worst of ideas from the West as opposed to the best of ideas. So the garbage finds unfiltered importation into this country in its humanities departments. And then that is being pushed. Now that the judiciary is actually acting as the conduit of creating a multiplier effect for such ideas without any kind of verification, without any kind of specialty, without any kind of expertise whatsoever, is a seriously problematic phenomenon, which is now, according to me, the negative charam seema of judicial activism. Good evening everyone. I am Suman Srivastava, a second year law student at Jamia Millia Islamia. As you all know, our temples continue to remain under the control of the state. But what I have seen so far is that there is complete silence from academicians, or be it activists, or be it political scientists, or even legal commentators. Even legal students are not interested in the topic. I think there is complete silence on this topic. No one even wants to attempt to look at this topic from even any perspective. So my question is, what should be our approach? Because we cannot only fight the legal battle. There has to be a pressure from every side. Until and unless everyone speaks about it, there will not be any solution. Here I'll give you something hopeful. This issue never featured in popular discourse 7 or 8 years ago. Now it has traction in primetime television debates. You have people writing about it. I can personally vouch for this when law students walk up to me and say, sir, we have taken up this particular issue as part of our projects, or as part of a thesis, as part of a research paper. Publications exist. And here's a wonderful gentleman sitting here, Yashovardhan Tiwari, who is a product of Jindal Global Law School, no less. His colleagues and so many people who he knows have written on rights of deities, on temple freedom, on each of these issues. So, Asha ki kiran hai. There's a huge ray of hope. That is precisely what gives a lot of us confidence that there is a lot of, how do I put it, it's not a useless exercise trying to invest in the future. There is a lot of hope from the current generation and they're working in that particular direction.
ऑब्वियसली इस मुद्दे को जो ट्रैक्शन पहले मिलना चाहिए था अभी तक मिला नहीं है, बट इट इज गोइंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. नो वंडर उत्तराखंड में BJP government first took over 51 temples, then had to give it up, and then they had to make a public statement when it comes to Karnataka that we will have to talk about freeing temples in Karnataka. So there is a movement in that particular direction. Because the basic question that people like us raised was, what is so different about Karnataka that it doesn't deserve the same treatment as Uttarakhand? The difference is you took the decision a few weeks before elections because you are about to lose 20% votes. Why can't you apply the same thing? The important part is इन discussions को जितना आप civilizational और सांस्कृतिक रखेंगे और political कम रखेंगे, तो आप दोनों तरफ के mistakes को ठीक तरह से point out कर पाएंगे. लेकिन अगर आपके affiliations जो है किसी एक organization की ओर हो, then you are not going to focus on the issue. You will try to defend a particular organization as opposed to trying to protect the issue. So I think it's important that such independent voices remain. And to be fair, there is some movement in that particular direction. I know for a fact that quite a few consultants and people who know the subject have been drafted to look at what could be the potential way forward. But ये state by state piecemeal क्यों हो रहा है? Temples जो है concurrent list के entry 28 में आता है when it comes to charitable endowment and religious institutions. तो एक model central legislation अगर बन जाता है, तो वो सारे state legislation को खर्च कर देगा. Then all of us will be saved the trouble of constantly knocking the doors of the court to get this job done. Why should the court waste its time, and why should we waste our time going to court on such an issue which is possible under legislation? That is a question of political will. इसके लिए कोरस जनरेट करना जरूरी हो जाता है ताकि उनको पता चले कि उनका जो बॉटम लाइन होता है in terms of votes वो इस पे निर्भर है. तो इसीलिए इसको एक इलेक्टोरल इशू बनाना जरूरी बन जाता है. Anyways, that's a larger discussion. It's a deeper discussion. But take it from me that there is a lot more hope than meets the eye, and there is a lot more movement that is happening. This much I know for a fact on first-hand basis. ये कितने last question होते हैं? जैन सर, अब मैं प्रणव हूँ. सर मेरा एक छोटा सा सवाल कम मार्गदर्शन ज़्यादा था जो मैं जैसे चाहता था. जैसे हमने ये एस्टैब्लिश किया कि धर्म सर्वोपरि है और धर्म का पालन ही हमारा कर्म होना चाहिए. लेकिन जब हम अपनी जीवन को देखते हैं तो एक प्रोफेशनल डोमेन है और एक हमारी पर्सनल डोमेन है, जिसके अंदर एक प्रोफेशनली हमें एक चार्टर इंटरेस्ट किया गया है जिसमें हमें ड्यूटीज करनी है, आदेश का पालन करना है. और जब हम पर्सनल डोमेन की बात करते हैं तो हम मानवता की बात करते हैं. एज अ मनुष्य हमारा क्या धर्म है और क्या कर्तव्य होना चाहिए. तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेशनल डोमेन में हमें ऐसे आदेश मिलते हैं या हमसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम कुछ ऐसा काम करें जो कि हमारी पर्सनल डोमेन एज अ मनुष्य में जो हमें इजाजत नहीं देता. तो एक तरीका है कि या तो हम आदेश का पालन करें या फिर हम प्रोफेशनल छोड़ के पर्सनल में आ जाएं. लेकिन जो भी हम करने की कोशिश करते हैं मन की संतुष्टि नहीं मिलती है एंड ऑफ द डे में, जो कि बहुत ही जरूरी है कि हाँ हमने अपने कर्तव्य का पालन किया. सर इसके लिए कैसे धर्म संकट से कैसे निकला था? धन्यवाद. देखिए, धर्म संकट जो है हर व्यक्ति के सामने समय समय पर आता है. उसी को चुनना होता है कि वो उसकी दिशा क्या होगी और किस प्रकार वो अपने धर्म का पालन करे. आप धर्म को कर्तव्य से जोड़िए और ये देखिए कि उस परिस्थिति में आपका कर्तव्य क्या है. न तो आप अपने परिवार को और स्वयं को इग्नोर कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन के प्रति भी आपको फेथफुल होना. प्रोफेशन के प्रति ये नहीं होना कि आप जो है अंधाधुंध किसी सेना में है कि उसने कहा दुश्मन के ऊपर वार करना है तो आपको कुछ कहना नहीं. ऐसा प्रोफेशन सिर्फ आर्मी का ही है कि जहां आपको ये नहीं कह सकते कि ये दुश्मन के ऊपर वार मैं क्यों करूं. लेकिन बाकी प्रोफेशन के अंदर तो आपके पास चॉइस होती है. और ये मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप स्टैंड लें और अपने बात के ऊपर अड़े रहें, निश्चित रूप से आपको रास्ता मिल जाता है. ये कोई ऐसा कठिन नहीं है कि आप इससे निकल.
ये दरअसल लास्ट क्वेश्चन ही था। तो हमारे समय सारथियों ने अपना बहुत सा समय हमें दिया है और साथ ही आप सब लोगों ने समययान के लिए सबसे कीमती समय है और आज हमें वो बहुत मिला है। मैं अब अनुरोध करूंगी सुश्री रजनी पिल्ले जी से सशक्त समाज के बिहाफ पर, क्योंकि हम एक लाइब्रेरी कम कल्चरल सेंटर हैं, तो हमारे गेस्ट के लिए किताबों से बेहतरीन आभार व्यक्त करने का तरीका नहीं हो सकता कि वो हमारे पहले स्पीकर जस्टिस प्रमोद कोहली जी का आभार व्यक्त करें। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती उषा गुप्ता ढींगरा जी से, जो खुद भी एक अधिवक्ता रही हैं, कि वो एडवोकेट JSaiDeepak जी का आभार व्यक्त करें। और अब मैं अनुरोध करूंगी नीरजा जी से, जो इस समययान के फिजिकल स्वरूप की आर्किटेक्ट हैं, कि वो जस्टिस नीरजा जी का आभार व्यक्त करें। अब एक चीज और है जो मैं अपने स्पीकर से कहूंगी कि कृपया किताबों को एक बार दिखा दें जो उन्हें मिली है, ताकि हमारे श्रोता भी इंटरेस्टेड हो सके। Snakes in Ganga, that's the first book by Rajiv Malhotra ji. Second is Abhigyan by Narendra Kohli ji, and the third is Freedom of Expression by Sitaram Goyal ji. समययान सशक्त समाज का एक उपकरण है। आप में से जो भी समययान के साथ जुड़ना चाहें, वह सशक्त समाज के मेंबर बन सकते हैं। मेंबरशिप फॉर्म्स सुमनेश चतुर्वेदी जी के साथ उपलब्ध हैं, और जो भी लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेना चाहें, वो भी शब्दालय का फॉर्म भर सकते हैं। सभी के लिए जलपान की व्यवस्था ऊपर है। आपसे अनुरोध है जलपान ग्रहण करके जाएं, और समययान में अपने विचार, सुझाव, कहानियां, किस्से, आइडियाज, ज्ञान, विज्ञान सब देते रहें, क्योंकि समय का ये यान इसी फ्यूल पर चलता है, आपके विचारों के फ्यूल पर। धन्यवाद इस शाम को अपना कीमती समय देने के लिए। I would really need the response of JSaiDeepak to my question. How do I get that from you? मैं आपको शेयर करता हाँ, अभी शेयर करेंगे? अभी इसको तो स्टॉप करेंगे, स्टॉप देंगे।